we have to store only one value at a time, but it vary throughout the program execution. जेमती कि आमे कहि परिबा आमे गोटे बस रे जाउचे जो सीट आम पे allocate होउची, so that seat is not allocate every time for me. So variable is that memory location where the value is changes throughout the program execution. Similar way, constant refers to a memory location that hold a value which remain fixed throughout the program execution. Okay, जेमती constant रोची घरे जदि तुमरो कोनोसे seat तुम पे allocate रोची, so that seat is only allocate for you, no other person is allowed to that particular seat. And when you consider as a variable, जेमती कि हमें गोटे सिनेमा देखिया जाउचे, and that seat that is defined to us, so that is seat is for us or it is belong to us for the particular time period. माने 3टा रु 5टा से समय पे सीटा अवेलेबल रहउची, तापरे आ गोटे जेतले शो आछे आ गोटे लोक सेठी बसुचंती, सो दैट सीट इज ऑलवेज चेंजेस. इट इज नॉट लाइक दैट आमे जेतेबेले जीवा हमकु से सीट रहउची, किंतु घरे जदि आमे देखिबा हमर स्टडी रूम रहउची, तो हमर जो रूम रहउची, सो दैट्स व्हाट room is fixed to us. Okay, the variable is a location or it is a memory where you have to store the value, that value you take from the user. And constant is a location where you have to store a value, but that value is fixed throughout the program execution. So write what is variable, Gibson heading, what is variable. Variable refers to a memory location that can store only one value at a time, but constant refers to a memory location that hold a value which remain fixed throughout the program execution. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍
ओके लिखिला दीटा वेरिएबल एंड कांस्टेंट आयुश्री प्रियंका प्रीति Yes, sir. okay consider an example a program okay so that accept two number and display their sum this program needs to three variable program पाखरे तीनटा variable अछि that आमे दीटा नंबर ऐड करिवा आ गोटे नंबर आमे शो करिवा तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर देन सम तो आमे एटी तीनटा वेरिएबल आमे डिफाइन करिवा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड सम द फर्स्ट नंबर पय आमे डिफाइन कले जेतला आमे फर्स्ट नंबर पय आमे मेमोरी रे डिफाइन करछे एटा होची दैट यूजर कैन गिव द वैल्यू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एठी आमे गोटे यूजर एठी पास करूची तापर एठी सम पास होची ये जो चार्टा तीनटा वेरिएबल आमे डिफाइन करूचे बट दैट वेरिएबल रो लोकेशन कंप्यूटर रे ए नंबर रे रहउची 4560 4562 4564 so it is the actual address of the memory एटा होची कंप्यूटर रे ए एड्रेस टा क्रिएट होची किंतु यूजर पई जो ना नेम टा रहउची एटा होची फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड सम बुझी होची एटा होची आमे जानुचे कंप्यूटर जानुची ए नंबर थ्रू रे एटा होची लोकेशन इट इज ए एड्रेस ऑफ द लोकेशन इट इज ए वैल्यू एंड इट इज ए वेरिएबल नेम बुझियला रिप्लाई दियो प्रीति Yes, sir. बुझियला एटा Yes, sir. now let us perform the following exercise you have to write a pseudocode okay that accept write a pseudocode that accept two number and display the sum and product considering the preceding requirement identify the variable and constant required for writing a pseudocode आ भितर केतरा वेरिएबल दरकार और केतरा कांस्टेंट दरकार हुआ Sir, chatta, chatta. चारटा कौन दरकार चारटा वेरिएबल ना चारटा कांस्टेंट सब जगह chatta, chatta. हम्म Variable भी chatta, constant भी chatta. वेरिएबल भी चारटा कांस्टेंट भी चारटा चलला नहीं 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 नहीं. आठटा लोकेशन भूलेगा प्रियंका बुझी होने. शुभलक्ष्मी ये सब सोई पड़छन्ती प्रियंका सोईची शुभलक्ष्मी आंसर दियो एटा होची आमे गोटे सुडो कोड लिखिबा जादरे कि आमे दीटा नंबर ऐड करिकी रिजल्ट शो करिवा दीटा नंबर ऐड करिवा नै दीटा नंबर नबा तार सम आउ प्रोडक्ट बाहर करिवा बुझी होची त बेस्ड अपॉन दिस थिंग हमको केतेटा लोकेशन एठी आमे डिफाइन करिवा हाउ मेनी लोकेशन यू हैव टू गिव chatta. yes so we require the four variable हमको four variable दरकार पड़िबो okay so we have to write a pseudocode that accept two number display the sum and product considering the preceding requirement हमें एठी चारटा वेरिएबल हमें डिफाइन करिवा ओटा होची फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर सम एंड प्रोडक्ट तो फोर वेरिएबल इज रिक्वायर्ड एबे को
you have to write a pseudocode that accept the product name and quantity as input and display the total price using unit price that is already stored in the system. Considering the preceding requirement, identify the variable and constant required in the program. ଏଠି କେତେଟା ଦରକାର? So dita ଦିଟା କ'ଣ ଭେରିଏବଲ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ? ଏଠି କେତେଟା ଭେରିଏବଲ କେତେଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା ପଚାରୁଛି। so gotte constant dita variable. Bote. ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଟା ଭେରିଏବଲ କ'ଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ? Yes. Constant ଟା ହବ ଯୋଉଟା already store ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ computer ରେ ମାନେ ତ display price ଟା କ'ଣ ଦେଖାଏ ଯୋଉଟା unit price ଟା ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦବା product name ଆଉ quantity. ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ୍ ଟା ରହିବ ଭେରିଏବଲ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହବ ଭେରିଏବଲ। ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣି ପାରିବା, କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କିଣି ପାରିବା, ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମର ପ୍ରାଇସଟା ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହିବ, ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାଇସଟା ରହୁଛି ସେଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର MRP ରେଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ବୁଝିହେଉଛି? तो while defining a variable, हमें तो variable टा define करिबा, first of all we have to define a data type. Data type means the type of data that you have to store in a variable. को type रा value हमें store करिबा, तो सेति पे हमें data type use करिबा। तो हमें जो variable define करूचे, तो variable is of two type. One is numeric, another is character type. A variable should be declared along with the data type. The data type specify the type of the value to be stored by the variable. माने मु को type रा value सेठी store करिबी। Each data type allocate a fixed amount of memory space according to the program specification. So based upon the program specification, सबु memory रा गोटे गोटे specific size होता है। जेमति कि हमें define करिबा, that means what, numeric and character जोटा define करूचे, आमे गोटे लोकेशन डिफाइन कर देले, तबे से लोकेशन ने आमे को वैल्यू रखिबा। बाजार को आमे जिबा, आमे धर पेट्रोल आनिबा, पेट्रोल तो आमे गोटे बैग रे परिवा बैग रे आनी परिबानी। तो that is a also a container, but it is not a appropriate container where you have to store a value. तो सेति पे आमे यूज करिबा कोन ना डाटा टाइप यूज करिबा। तो डेटा टाइप जो आम यूज करुचे से डिस्क्राइब करिवो द टाइप ऑफ डाटा दैट यू हैव टू स्टोर इन ए वेरिएबल। आम कैरेक्टर टाइप रो स्टोर करिबा कि न्यूमेरिक टाइप रो स्टोर करिबा, ताको डिफाइन करिबा। ओके, एबे लेख ए दिटा डेटा वैल्यू लेख। फर्स्ट हेडिंग द डेटा टाइप, it define the type of data that is stored in a variable.
yes sir ହେଇଗଲା। देखला न्यूमेरिक कैरेक्टर लिखिला सर ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଲେଖିବା 3ଟା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ତା ତଳୁ ତଳୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଲେଖ दैट इज न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर आउ जने अटेंड करनी नाटा मन पड़नी तुम सांग सी कोड़े जी ମୁଁ ତ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। अच्छा each data type allocate fixed amount of memory space सर पॉइंट वाइज କରିକି ଲେଖିବା। नहीं पॉइंट वाइज नहीं तपर लिखो each data type allocate क्वेश्चन नहीं यार डाकुची पूरा डाटा टाइप टा हेडिंग डाकुची तो से जो पैराग्राफ କରିକି ଲେଖିବା डिफाइंस ରୁ कैरेक्टर ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲୁ ତାପରେ ଲାଇନ ଟା ଲେଖିଲୁ। मु डाकुची लिखो डाटा टाइप हेडिंग दियो it define अच्छा data type heading with लिखो it define the type of data it define the type of data that is stored in a variable then each data type allocate fixed amount of memory space each data type allocate fixed amount of memory space according to the programming language specification okay so while you define a variable ame tale variable ta define kariba so that should be start with any letter ame variable jetale start kariba the variable name will start with a any letter gote letter ru amara start heidiba darkar it must not be start with any number konosi number ru start hobani then while naming a variable the following rules must be followed it consists of letters it must not start with any digit konosi number ru start hobani then it must begin with a letter or underscore आमे जदि कोनोसी सिंबल ले स्टार्ट करबा को चाहूचे ताले आमे अंडरस्कोर देई परिबा किबा कोनोसी सिंबल देई परिबा बट को सिंबल देई परिबा नहीं आमे देई परिबा नहीं क्वेश्चन मार्क नॉट एक्सक्लेमेटरी @ हाश डॉलर percentile cap and star bracket end so we cannot share we cannot pass this value आमे एई सिंबल्स पास करिबा नहीं आमे को सिंबल पास करि परिबा ना जदि वेरिएबल टा हमर डिफाइन करिबा फर्स्ट आमे यूज करि परिबा अंडरस्कोर यूज करि परिबा दैट मींस आमे वेरिएबल गोटे सपोज डिफाइन करूचे suppose mu likhibi student age so I can define here student space age if I define then it is incorrect okay so for defining it jodi mate konosi space darkar tale mu eti underscore use karibi student underscore age okay and your variable name is not starting with any kind of symbol @ name we cannot pass okay if
you want to start with any symbol, here underscore is used, underscore name. Okay, so it is used to start with the variable name. Let us pass karala se jago. It must begin with a letter or an underscore. It must not contain any embedded space and symbol. Okay, so lekho eta viparata. Declaring naming convention while declaring variable. Naming convention while declaring variable. देखिला लेखिले कन्फर्म करियो. सैला
Yes, sir. Okay. So in addition, the variable naming rule may consider the following variable naming convention. The first letter of the variable may indicate the data type. तो आम जो वेरिएबलटा डिफाइन करवा सपोज हमको आम न्यूमेरिक आउ कैरेक्टर दुटा डेटा टाइप डिफाइन करवा तो ये स्टूडेंट एज माने ये न्यूमेरिक आसो तो ये आम पास करवा न्यूमेरिक न्यूमेरिक ये डाटा टाइप डिफाइन हम n represent that the value that we are storing in the student age is numeric. Then जदि मते नेम स्टोर करिवार अछि तेटे मु डिफाइन करिबि कैरेक्टर सी नेम तो एटा हमें डिफाइन करिवा सी नेम ओके सो सी रिप्रेजेंट कैरेक्टर तो अगर जरा स्टूडेंट एज पास कराउछि एटा कैपिटल करिवो बुझि होछि न्यूमेरिक n टा स्मॉल हबो तापर s एटी कैपिटल हला कैरेक्टर एटी c टा स्मॉल हला n कैपिटल हला बुझिला Sir, already କହିବେ वेरिएबल टा जते बेले हमें डिफाइन करिवा प्रथमे हमें डाटा टाइप डिफाइन करिवा तो हमें जानि छे जे हमें जो वेरिएबल टा यूज करूचे एटा दी प्रकार रहइबा गोटा होची न्यूमेरिक आ गोटा होची कैरेक्टर न्यूमेरिक जते हमें डिफाइन करिवा सेटा n रु स्टार्ट होची माने स्मॉल n पास करिवा देन हमें वेरिएबल नेम पास करिवा कैरेक्टर c देन नेम बुझी होची तो कैरेक्टर एटा ला c देन नेम एटा न्यूमेरिक n देन स्टूडेंट एज तो हमर जते बेले वेरिएबल नेम टा दबा तो फर्स्ट लेटर टा जदि न्यूमेरिक अछि n पास करिवा जदि कैरेक्टर अछि c पास करिवा आउ तापर लेटर टा जो वेरिएबल ला कैपिटल हबो यदि स्टूडेंट नेम रे एज टा कैपिटल हबो एठी n टा एठी कैपिटल हबो नेम रे बुझिला yes, sir. सर ये मैंने n स्टूडेंट को आगुरु न्यूमेरिक मैंने लिखा हबो ना लिखा हबो ने लिखा हबो ना न्यूमेरिक लिखा हबो आज डाटा टाइप हमें डिफाइन करिवा बुझियो ओके लिखो द फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल द फर्स्ट पॉइंट लिखो variable naming rules first letter of the variable indicate data type first letter of the variable indicate data type Sir, heading कौन थिला variable naming rules शीघ्र लिखो सरजियो टाइम the first letter of the variable indicate the data type next sir तापरे the first letter of the variable may indicate the data type next point variable name should clearly describe its purpose variable name should clearly describe its purpose variable name should clearly describe its purpose in the case of variable name consist of multiple words
consist of multiple word the first letter of each word should be capitalized. देखिला Yes, sir. तापर syntax लिखो data type then variable name, data type then variable name. Okay, okay, so हमें नेक्स्ट क्लास रे अगेन देखिए आपटू पड़ियो है ना. Okay, sir. ठीक है.